Sahil Samuel, also known as Nalayak, welcome. It's been such a long gap since we last connected about 3 years ago, bang when the pandemic had just started, and when you had released about 4 songs from Hindi Gaane then. Wow, firstly, I'm excited because I feel like I'm connecting with a long lost friend. So, how are you? Exactly. How are you? I asked. I'm good. I'm doing great. I'm happy working on my new music. Lovely. I mean, we are already looking at brand new tracks from your upcoming album, Sexy Bhaiji. I believe you'll be releasing it in March. But we already have 4 songs that are out, and I Yeah. think at the time of this interview going live, we will have about 2 or 3 more coming out in the month of Feb. So, how do you look at how Sexy Bhaiji has kind of rolled out? Because I believe when we last connected during Hindi Gaane and I think it was in April 2020 that we last connected for Hindi Gaane, and at that time Sexy Bhaiji was in the works. Although before we started filming this interview, Sahil maintains that Sexy Bhaiji has been in the works since 2018. So 5 years Yeah, down the line, surviving a pandemic, it's now out there, for everybody, all your fans to listen to. So how do you look at the evolution of Sexy Bhaiji? So this is the album that I was planning from long, और मतलब मेरा plan ये था कि I don't want to make this album sound मेरा previous काम जितना भी है. So I wanted to make this album different musically, lyrically. So I started with the song called It's Me. So I was like, whole pandemic was very like फायदेमंद था मेरे लिए. I worked on my writing, compositions and all. So for this album, I'm doing collab with so many different artists. Subir Malik sir from Parikrama. Then there is a girl from Japan who played trumpet in my song. And there are like few Her name many other is musicians. Chie. Shie. Okay. Yeah, she's from Japan. So she is in Delhi. She's working with bands. So अभी जो और गाने आने वाले हैं उसमें भी काफी अच्छे अच्छे collabs हैं. The song I'm more excited about the song called Bandeya 2 and Noori. So there is a big collab with great musicians. And this album is literally working very great for me, for listeners also. They're loving it, a different sound coming from Nalayak. But since you spoke about Subir Malik, I know what an overwhelming feeling it is for you to even be playing alongside the seasoned musician himself, because you just did a Yeah, gig in you just did a gig in Mumbai with where him, yeah, with Parikrama and friends. Parikrama as part of Parikrama and Friends. And Yeah, also just last year you released a very fruitful collaboration with him, Nusrat, which was also yeah, one of your first NFT enterprises. So yeah, exactly. everything else, just the experience of sharing a collaborative space with someone as experienced as Subir Malik, how was that feeling? Like जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, he was touring the world. And like sharing stage with him, getting in the studio with him, recording your song, and he's appreciating your lyrics and everything, and he's telling me that you are the best writer I'm listening in India right now, and he's working with me. And I asked him, sir, how much you will charge? He's like, कि थप्पड़ मारूंगा साले, दोबारा मुझसे पैसे की बात करें. कहते मुझे यही चाहिए, कहते म्यूजिक बजाना है, पूरी लाइफ हमने कमाया है, सब कुछ किया है, बट आई वांट टू वर्क विद अ गाय हु राइट्स वेल एंड कंपोज वेल. सो he did a one more song with me, It's Me. He's in the video also Hmm. from the Sexy Bhaiji album. He's doing two songs with me, Noori and Bandeya 2 from the upcoming album. So I was so happy. I went to their house for jamming for the gig, Parikrama and Friends. I was so happy to see all of them because सब इतने बड़े बड़े हैं मुझसे, like 25-30 साल बड़े बड़े हैं. उनका experience सुन के I was getting very motivated, and every one of them were the best part. They were singing my song and they were telling me that this is stuck in our head, man. It's a song called It's Me, and I was so happy. Like I was literally like shivering. Ke, wow. So I was happy, and I had a very great experience playing with him, working with him. And during the gig that you all played in Mumbai, as part of Parikrama and Friends, of course, there was also an opportunity to interact with other seasoned musicians also, whether it was Indian That Ocean. was the best part. That was the best part. We shared the hotel also, and इतने अच्छे अच्छे singers, and मतलब मजा आया उनके साथ conversation करके, musical बातें करके, और हमने मजाक भी किया, चुटकुले and jokes and all were laughing. So it was a like मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक experience था कि मैं इतने mature industry के musicians के साथ बैठा हूँ, मिल रहा हूँ, and they are listening to my songs, they are playing with me. So that was the best part.
For those who aren't still familiar with, your formation and how did Nalaik come about. Firstly, many don't even know that, Nalaik is actually your stage name, which has, come to become या a या part of your बिकॉज quartet. बिकॉज मतलब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं करता लोगों को, बिकॉज व्हेन यू सी 4 6 people on the stage, so it's a band for them only. For Yeah. example, if you take any singer name also, if he's working as a name, real name, जो भी example Sahil Samuel live, so it's like a Sahil Samuel band. People will recognize you like that only, कि आप band ही हो. So I formed Nalayak in 2015, Yeah. the 21st October, and that night when I got this name, I firstly called Subir sir in 2015. रात को 1 बजे कि Ah. सर ये मुझे नाम अच्छा लगा, आप बताओ. कहते साले कितना खतरनाक नाम है, तू तो कुछ भी कर सकता है, फिर लोग तुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तू फ्री होके म्यूजिक कर सकता है अपना. यू विल बी ग्रोइंग सच बिग आइडियाज इन योर ब्रेन एंड यू जस्ट गो एंड डू इट. तो सुबीर सर वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक टू मी कि हाँ तू नालायक नाम रख. तो उस टाइम कोई भी नहीं था. आई वाज अलोन, आई वाज लुकिंग फॉर म्यूजिशियंस. फिर म्यूजिशियंस आए, उन्होंने मेरे साथ काम किया. सो आई रिलीज माय फर्स्ट सॉन्ग. दैट टाइम आई वाज अलोन ओनली. मेरे साथ उस टाइम गिटारिस्ट था. सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग वी रिलीज सावन इन 2016 Yeah. मार्च में. तो ऐसे से हुआ. और फिर बीच में भी मैंने लाइनअप चेंज किया आफ्टर पेंडेमिक. आई एम वर्किंग विद न्यू म्यूजिशियंस, सो आई हैव न्यू म्यूजिशियंस फ्रॉम दिल्ली. My guitarist is from Darjeeling, my drummer is from Chandigarh only, and I'm having good Oh. time with them because I wanted people with a vision. मतलब मुझे वो नहीं चाहिए कि हाँ गिग है, गिग करेंगे, कितना पैसा मिल रहा है. तो मुझसे जो काम से पहले ही हिसाब किताब पूछना शुरू कर दे, तो मुझे ऐसे होता है कि ब्रो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन द म्यूजिक. इन फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ही मत पूछो, तुम्हें मिलेगा जो कमिटमेंट किया है, यू विल गेट एवरीथिंग. आधे से ज्यादा म्यूजिशियन इसीलिए थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं. और लॉकडाउन का सबसे बेस्ट पार्ट ये था मेरे लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, जितने सो कॉल्ड मतलब वानाबी टाइप्स म्यूजिशियंस थे ना, सब ने क्विट कर दिया लॉकडाउन में. और अब सारा जितना म्यूजिक आ रहा है, इफ यू विल नोटिस ना, सब एक म्यूजिक एक फिल्टर होके आ रहा है, एंड देयर इज अ क्लास ऑफ दैट Mm. म्यूजिक. यू विल सी द मैच्योरिटी इन लिरिक्स एंड एवरीथिंग. वो जो बीच में आती थी थोड़ी बकवास फालतू चीजें, वो चीजों को हाइप मिलता था, वो चीजें अब बंद हो चुकी हैं. दैट्स व्हाई इंडी सीन इज गेटिंग मोर अप Yeah. इन इंडस्ट्री. सो मेरे को ये चीजें, मैंने तो ये चीजें स्टडी की है अपने लॉकडाउन में कि ये फायदा हुआ एक आर्टिस्ट को जिनके पास विजन था. बट अगर आप बात करते हैं उन म्यूजिशियंस के बारे में जिन्होंने क्विट किया, डू यू थिंक इट्स आल्सो समवेयर, अगर एक एम्पैथिक लेंस से अगर हम देखें उनको, डू यू थिंक इट्स आल्सो फेयर टू लाइक गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट एट दैट टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक एग्जैक्टली. एवेन्यूज कम थे, कमाने का जरिया नहीं था, आई एग्री. शोज बंद बिल्कुल थे. बिल्कुल. हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ. मतलब अभी भी बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं इंडस्ट्री में जो सुबह ऑफिस भी जाते हैं, शाम को अपने म्यूजिक का 1 घंटा निकालते हैं, दे गो फॉर अ गिग, दे जी. टूर. तो वो था कि मैनेज करना. मैं तो ऐसा था कि आई डोंट डू एनीथिंग. आई वाज लाइक, मैं 11th पास आउट लड़का हूँ, मेरे पास तो कोई जॉब ऑप्शन भी नहीं था लॉकडाउन में, कुछ भी नहीं था. आई जस्ट हैव वन ऑप्शन, घर पे बैठ बस फ्यूचर का प्लान करता रहे जो आने वाले साल है. कभी ना कभी तो पेंडेमिक खत्म होगा, यू विल बी गेटिंग ऑन द स्टेज. तो हाँ मतलब ये भी था कि क्या पता, फैमिली रीजंस भी नहीं पता, लोगों के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. बट हाँ मतलब मुझे ऐसे था कि एक होता है ना कि आप म्यूजिक कर रहे हो 10 साल से, 6 साल से, 15 साल से, और आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. सिर्फ एक चीज आई, उसने आपको डराया एंड यू जस्ट क्विट इट. तो उस या. पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा हुआ है. बाकी हाँ सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल फैमिली प्रॉब्लम है ना. Absolutely, so rightly said. Sahil, when you look back, at the time when you thought of adopting this as your stage name, in the Indian context of it, from an outsider's perspective, यही लगेगा कि you decided to turn around a term that is used as, a term to ridicule somebody. And you have turned it out as, you have turned it around as a compliment. And, people recognize you by that very name. And this was a Exactly. name that was given to you by your family and your teachers, when you were a young kid. So now when you look back at your journey in retrospect, how do you So, just explain that? so ये जो नाम है ये, that I decided, this name I decided in class 11th when I was in hostel. So there was one of my senior, उसका नाम पवन था, he was from Guwahati I guess. तो आई टोल्ड हिम कि ब्रो मेरे को तो म्यूजिक करना है. तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी सेकंड क्लास में. आई जस्ट सॉ अ ड्रीम. मैं बेहोश हो गया था क्लास में. आई जस्ट सॉ लाइट्स इन स्टेज और मैं बेहोश हो गया. मेरे पेरेंट्स मुझे घर लेके चले गए. तो वो ड्रीम मैंने Oh. उस टाइम मम्मी को बताया था, पता नहीं किसी और को भी बताया था. तो आफ्टर दैट आई वेंट सीधा 11th क्लास में. आई वाज इन द फिजिक्स लेक्चर
मैं बैठा हुआ था, मुझे सेम दिखा, और उस मतलब 11th क्लास में ये दिखा कि मुझे पूरी ऐसे लेग्स दिखी, एंड गाय वाज वेयरिंग बेल बॉटम वाइट एंड ही वाज रनिंग। फेस कुछ नहीं दिख रहा था, और लाइट्स थी, और मैं एकदम लाइट इतनी ब्राइट हुई, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा था, ब्लैक बोर्ड की तरफ क्लास में, और मैं फिर से फेंट हो गया। देन आई कॉल्ड माय मदर फ्रॉम हॉस्टल के I want to quit school. I just know what I have to do now. So I'm very much clear with my vision. She was like, what happened? I was like, I saw the dream again. I wanted to be a cricketer actually. I was a very famous cricketer in my school time. So I Okay. wanted to be a cricketer. Like बहुत ही ज़्यादा वो था कि मुझे cricketer ही बनना है. So this name was traveling with me from class 5th, क्योंकि मैं 5वीं क्लास के बाद से I was the worst student in the class. मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था. So नालायक, घर पे नालायक, मार पड़नी. So I was like कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, लोग जो मर्जी सोचे, दे कैन नॉट गेट इनटू माय ब्रेन एंड माय बॉडी, एंड दे कैन नॉट फील व्हाट आई फील कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो आई जस्ट वेंट, स्कूल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक विद दिस नेम नालायक। उससे पहले मैंने छोटी छोटी गिग्स करी क्लब्स में, एंड आफ्टर दैट 2015 आई डिसाइडेड कि नो, बहुत हो चुका है ये, अब यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर म्यूजिक एंड जस्ट डू इट। मुझे बहुत सुनाया गया, बहुत कुछ बोला कि ये शर्म नहीं आ रही है, नालायक नाम है। मेरे रिश्तेदारों ने, मतलब पेरेंट्स ने तो इतना नहीं बोला, पर रिश्तेदारों ने ज्यादा, कि इसको बोलो सोशल मीडिया का अकाउंट डिलीट करे, उसमें क्या पिक्चर्स डालता रहता है। आई टोल्ड देम आई एम नालायक, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन पोस्ट एनीथिंग। कहते हैं अंडरवेयर में पिक्चर है, मैंने कहा मैं बिना अंडरवेयर के भी डालूंगा। दे वर लाइक कि डिलीट करो पेज, ये You'll वो pull off a लाइक Ranveer दैट। Singh maybe. या सो इट्स लाइक दैट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस नाम से। सबसे बेस्ट पार्ट है, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको कोई ना कोई आपका फैन मिले, इन द फ्लाइट आल्सो दे कॉल यू नालायक। सो आई से प्राउडली यस यस आई एम नालायक। और कई बारी क्रू के सामने, एक दो बारी तो क्रू के सामने पे, दे आर लुकिंग एट मी कि ये कितना प्राउडली सेइंग यस आई एम नालायक, हाय नाइस टू मीट यू। सो आई फील प्राउड। But how do you filter out all that noise, no, Sahil? Because हम कितना भी, how much ever we put up that, that straight face, that strong side of us, saying that, it doesn't affect us. Somewhere or the other down the line, it does tend to, get to our head. It does tend to rattle us a little bit. कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी हिम्मत टूटती ही है कहीं ना कहीं. So how did you नाम को filter लेके, out all that noise? I mean, बिकॉज ऑफ, जो आपने आपके रिश्तेदार है, जो भी, the critics or the cynics as you may call them, how आई did डोंट you नो, filter all that out? आई गेस आई विल से दैट्स अ गॉड गिफ्ट। मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे अभी भी कभी फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ बोल भी दे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एंड फिर लोगों को लगता है, पीपल टेल मी कि यू डोंट हैव इमोशंस, यू डोंट गेट अटैच्ड टू पीपल। आई वाज लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, बट मुझे अपने आप को सेंसिटिव नहीं बनाना कि वो मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या बात हो रही है मेरे बारे में, मेरे नाम को लेके क्या बात हो रही है, मेरे फैमिली, मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। मैं कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। आई गेट लाइक आई हैव वन लाइफ, उसके बाद दोबारा चांस तो मिलेगा नहीं कि मैं कोई और ऑक्सफोर्ड, मैंने बीच में आर्गुमेंट भी होती किसी के साथ, आई वाज लाइक ओके आई विल कीप माय बैंड नेम ऑक्सफोर्ड, ठीक है। सो दे वर लाइक कि नहीं ये तो कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं कहा बस देन इट्स फाइन ना, नालायक भी अगर कोई मतलब नहीं बन रहा, वो मेरे लिए मतलब बन रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दिस नेम। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कभी नाम को लेके। Amazing. I think, कहते हैं ना, जो जिद्दी है दुनिया उसकी उसी की है. एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है आपके पास अगर विजन है ना, तो आप कुछ भी नाम रख दो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपका काम आपको आगे लेके जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं। थोड़ी म्यूजिक की बात करते हैं. द लास्ट टाइम जब हमने, व्हेन वी कनेक्टेड, व्हेन इट वाज फॉर हिंदी गाने, आई रिमेम्बर व्हेन आई टुक योर इंटरव्यू, देन यू हैड मेंशन्ड हाउ you don't look up to anybody in particular when it comes to songwriting, क्योंकि आपके जितने भी गाने हैं, as as Nalayak, they're all very lyrically rich. They're all, somewhere or the other, a word or two, or an entire words will always find some resonance with the ultimate listener. But you don't necessarily go around looking, or reading. You're not a reader. You don't आई really look up any. मैंने Yeah. स्कूल के बाद कभी किसी किताब को हाथ नहीं लगाया, बस एक गंदी सी डायरी रखी हुई है, उसमें कुछ हिसाब किताब लिखना होता है वो लिख लेता हूँ। आई डोंट इवन लाइक राइटिंग विद पेन। आई जस्ट, अगर गाना बना रहा हूँ, इट विल स्टक इन माई ब्रेन, आई विल रिकॉर्ड ऑन द फोन और वो गाना बन जाएगा। एंड आई डोंट रीड एनी बुक, बिकॉज इतने 30 साल का हो चुका हूँ, आई विल बी 31 नेक्स्ट मंथ। सो मैं खुद ही इतनी बड़ी किताब बन चुका हूँ, आई हैव सो मेनी चैप्टर्स इन माई soul, in my heart, in my brain. So I read everything, every situation, मेरे साथ क्या हुआ, how was my childhood, अभी मेरा पास्ट कैसा था, मेरा फ्यूचर कैसा था। तो अब जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, दे गिव यू वेरी गुड लेसन एंड यू जस्ट पिक इट फ्रॉम देयर एंड राइट। मेरा तो सिंपल फंडा, आई डोंट रीड एनी बुक, बिकॉज
एक बारी एक आदमी था, मैं आई वोंट मेंशन द नेम, ही इज अ म्यूजिशियन Yeah. ओनली, ही गॉट ऑफेंडेड। आई टोल्ड हिम कि ब्रो यू रीड एंड राइट, दैट मींस यू आर लाइक, ये चीटिंग कर रहे हो आप। आपने वो वहां से पढ़ा है, उसमें सिर्फ दो शब्द बदले हैं और आपने उसको गाना बना दिया है, एंड यू आर सेइंग कि यू राइट लिरिक्स एंड ऑल। मैंने कहते हैं इंडस्ट्री में सब लोग पढ़ के लिखते हैं। मैंने कहा चलो मुझे नहीं पता, मैं आपको देखा, आपको मैंने बोल दिया दिस इज अ चोरी, दिस इज नॉट रियल, यू हैव रेड समथिंग, अ पैराग्राफ, एंड यू आर टर्निंग दैट paragraph into a song and putting just 2 3 words from your side, and that's not your work. So he got very offended, like वो पागल हो गया था वो इंसान। तो I read myself, I have so many things. So, basis on your definition of songwriting, or basis on your definition of making music, if I have to ask you, in your humble opinion, who have been some of the best songwriters in the Indian independent music scene right now? मैं सबसे, जब मैं बहुत लेट इंडियन बैंड को सुनना स्टार्ट किया था, जो मैंने पहला बैंड सुनना स्टार्ट किया था, इट वाज रघु दीक्षित। एंड आई वाज लाइक कि यार हमारे इंडिया में भी इतने खतरनाक बैंड्स हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू लिसन टू अली जफर, जुनून, नूरी फ्रॉम पाकिस्तान। After that, I heard Indian Ocean and I joined a band called Swastik for only for 1 year. So Hmm. I was covering Indian Ocean, and that time they introduced one song called Sadhore, and that was by Agni. And I Yeah. was like, कि ये लोग क्या लिखते हैं मतलब। फिर उसके बाद I heard one song from Lucky Ali, मौत। Then I covered that song and I was like कि यार ये लोग बहुत ही खतरनाक है, काश मैं मतलब ऐसी चीजें लिख पाऊँ। I started writing in 2016, like officially ना। Ah. उससे पहले थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसे से लिखता था, दैट वाज वेरी इमेच्योर, स्कूल वाला दिमाग एंड ऑल दैट। तो आई रियली लव लाइक लकी अली की राइटिंग, रघु दीक्षित, देन बैंड कॉल्ड स्वरात्मा, Hmm. और इंडियन ओशन। तो ये 5 6 उस टाइम बैंड सुने स्कूल के टाइम में, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये मतलब इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, मतलब इन्होंने सोचा कैसे हम गिटार यहाँ पे ये बजाएंगे, ड्रम विल एंटर फ्रॉम हियर एंड ऑल। आई वाज लाइक कि बहुत दिमाग, मतलब कितना मुझे एनर्जी चाहिए होगी ये काम करने के लिए फ्यूचर में। सो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक कि हाँ यार मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है इस सारी चीजों को अरेंज करना एंड ऑल। हम हमेशा I always try to tap into newer talents from different cities, क्योंकि for long actually the independent music space has more or less progressed, or it has just transpired between 3 or 4 major cities in India. We talk about Delhi, or we talk about Mumbai or Bangalore or Pune, or कभी कभी चेन्नई या कोची की मेंशन होती है, लेकिन चंडीगढ़ के बारे में बहुत ऐसे there are very few and far in between acts, maybe from the hip hop space or from the rock space, that kind of make a significant impact for Chandigarh as a city. As someone who is a city lad yourself, if you can give us an idea about who are some of the most promising acts from Chandigarh that we must keep in our radar. Chandigarh, like first of all, Chandigarh, like you know the band called Local Train. So I was in the school. Local Train is from Chandigarh. So मैंने उनको भी सुना. By the way, हाँ, Raman Negi, his songwriting is very amazing. I loved it from the school time. I was in class 7th when I heard their first song called Chulo. Yeah. So they moved out from Chandigarh. Then there was a band called Swastik I joined. There was a song Jogi by them. I loved that song. I was working with them. बट चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैंने खुद, मुझे 7 साल हो चुके हैं नालायक को करते हुए। आई हैव प्लेड जस्ट 6 shows इन चंडीगढ़। लाइक चंडीगढ़ में इतना सीन नहीं है, चंडीगढ़ में इंडी सीन इज टोटली डेड। इफ यू आर इंडी बैंड Just यू हैव 6 नो। shows? या बिकॉज दे वांट, चंडीगढ़ का एक कॉन्सेप्ट है, जो मूवी नई आई है और उसमें किसी सिंगर का गाना विच इज गेटिंग हिट, दे विल आस्क यू फॉर द The ट्रैक cover लिस्ट। of वो it. मैं हाँ कि कवर आप कौन सा करोगे, नया गाना इस मूवी का डाला या नहीं डाला। वंस आई गॉट अ कॉल फ्रॉम चंडीगढ़, उसके बाद से तो मैंने मना ही कर दिया कि मैं चंडीगढ़ में शो करूंगा तो टिकटेड करूंगा, जो आएगा मेरा फैन सुनेगा। सो द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड मी कि अच्छा आपका बैंड है, मुझे आपका शो करवाना है। आई वाज लाइक हाँ जी बताइए। कहते बट आपके बैंड में फ्लूटिया है क्या। आई वाज लाइक कि ये वर्ड मैंने पहली बार ही सुना है म्यूजिक, मतलब Lutia. ऐसा फ्लूट प्लेयर को ही वाज कॉलिंग फ्लूटिया। आई वाज लाइक सर थैंक गॉड आपने स्पेलिंग चेंज नहीं करी, वरना कुछ और ही हो जाता। तो कह रहा हमारे यहाँ तो हम फ्लूटिया ही बोलते हैं, कि बैंड में फ्लूटिया है, ढोली है, ये वो। मैंने कहा सर उसको फ्लूट प्लेयर बोलते हैं, फ्लूटिया कोई टर्म नहीं होती। और थैंक यू सो मच, मैं आपकी प्रॉपर्टी में अब शो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो चंडीगढ़ में सीन इज वेरी डेड। चंडीगढ़ में बस सुनने के लिए जो है, अच्छा लाइक स्वास्तिक, दे आर मेकिंग गुड म्यूजिक, लोकल ट्रेन था, और नालायक भी वहीं से निकला है, लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा सा। और तो इंडी बैंड्स वहाँ पे चंडीगढ़ में
अभी बन रहे हैं नए नए, बट ऐसा नहीं है, मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग। क्योंकि क्या होता है, आप जिस शहर से शुरू कर रहे हो अगर वहीं पे आपको डिमोटिवेट कर दिया जाए, फिर आप भी थोड़ा स्लो हो जाते हो कि नहीं यार, कौन दिल्ली जाएगा, कौन मुंबई जाएगा। सो इट्स लाइक दैट इन चंडीगढ़। इफ यू हैव बिग सेट लिस्ट ऑफ ऑल हिट बॉलीवुड सॉन्ग्स, आप वहां पे मंडे से लेके संडे तक शो ही होते हैं, और एक बैंड के मंडे से संडे तक शो ही होते हैं Very अलग good. अलग प्रॉपर्टीज में। सो चंडीगढ़ म्यूजिक सीन इज वेरी डेड। सो It's very ironic you say that about Chandigarh because when I remember in my one of my former interactions with Parvaz, they had said that one of their best crowd experiences was in Chandigarh. बिकॉज So मैंने वही बताया ना, दैट्स व्हाई आई डू टिकेटेड शो इन चंडीगढ़। आपको आपके लिसनर प्रवास आल्सो डू सेम थिंग, दे डू अ टिकेटेड शो। सो जिसने प्रवास सुनना है, दे ओनली विल कम ना। अदरवाइज वहां पे क्या होता है, इफ यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, तो बंदूक बंदूक निकल जाती है, दे विल स्टार्ट थ्रोइंग ड्रिंक्स ऑन योर फेस। बिकॉज really? पंजाबी पीपल एग्रेसिव, आई एम आल्सो पंजाबी। तो होता है लाइक कॉलेज स्टूडेंट है, दे गेट एग्रेसिव, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। सो वहां पे बहुत मतलब ऐसा सीन है, दे वांट टू लिसन पर्टिकुलर सॉन्ग्स के, ये चाहिए वो ये चाहिए, हमें ढोल चाहिए, हमें नाचना है। सो जब ये प्रवास का शो हुआ था, आई वाज देयर ओनली, आई आल्सो गॉट अ टिकट एंड स्पेशली वेंट टू लिसन टू देम। इट हैपेंड इन अपस्टेयर्स 2018 में, जब मैं गया था, देयर वाज अ सच ह्यूज क्राउड, क्योंकि उनको प्रवास सुनना था, बिकॉज दे वर अ गुड जी लिसनर्स। चंडीगढ़ में है गुड लिसनर्स, बट बेचारे सुन नहीं पाते बैंड्स को। आप देखोगे चंडीगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी इंडी गिग्स होती नहीं है, बहुत रेयर होती है। इट्स ऑल अबाउट लाइक पंजाबी एंड बॉलीवुड आर्टिस्ट, क्योंकि वहां पे है नहीं वो। और टिकट्स फिर महंगी होती हैं, फिर देर लाइक कि हम क्यों इतना पैसा खर्चें। अगर कोई famous Punjabi singer aa raha hai, they will spend 5,000 10,000 also on ticket, but for bands like they will like 500 700 भी ज्यादा लगता है उनको। my God. First of all, the fact that कि इतनी aggression निकलती भी है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव। आई वॉज इन चंडीगढ़, मैंने जब नालायक से पहले खुद ऐसे स्टार्ट किया था परफॉर्म करना, तो मेरे साथ म्यूजिशियंस थे, आई वाज परफॉर्मिंग इन चंडीगढ़ एलांटे मॉल। सो आई वोंट हाँ मेंशन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। सो देयर वाज अ गाय केम विद अ गर्ल एंड ही वाज टेलिंग मी टू सिंग सॉन्ग, बार बार कान में आके। फिर उसने मेरे कॉलर से खींच के, सुनाई नहीं दे रहा है तेरे को, ये वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था ना, तो ही वाज शोइंग गर्लफ्रेंड को कि चौड़ चौड़ हो अभी रहा था वो। चौड़, और मैं अभी गवाऊंगा, इससे गवाऊंगा, ऐसे बार बार उसको बोला क्या अभी गवाऊंगा गवाऊंगा। मैंने उसको मना कर दिया। व्हाट ही डिड, वो गया वहां पे जो खा रहा था, उसने ऐसे फेंका, वो लिटरली मैं ऐसे टर्न हुआ, वरना मेरा नाक नूक फ्रैक्चर हो जाता। इट वाज अ बाउल। तो उसके बाद मैं घर गया, आई वाज सो सैड। तो देन आई रोट फर्स्ट एल्बम का एक गाना है कुछ भी, तो वो मैंने फिर उस रात को वो गाना लिखा कुछ भी। तो वहां So पे थोड़ा ऐसा literally an instance of being heckled is what led you to write a song. या एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती है। दैट्स व्हाई आई डोंट फील लाइक रीडिंग एनी बुक टू राइट अ सॉन्ग। मिलते रहते लोग ऐसे, या कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते रहते हैं, देन आई गो आई राइट। Sahil, I remember when we last connected for Hindi Gaane, while releasing that album, one of the things you had pointed out to me, and I still remember very vaguely, was how you all had, spent a huge budget, while making that album. It was about 9 to 10 lakhs, या एग्जैक्टली। with avenues of income or all sources of income kind of taking a back seat because of the pandemic. How did you manage to compile and compose Sexy Bhaiji? And I believe you also सो have another album you're all about to work on. सो जब ये एल्बम रिकॉर्ड हो रही थी, दैट टाइम देयर वाज नो पैंडेमिक, वी वर डूइंग शोज। तो शो से पैसे सेव करके वी वर रिकॉर्डिंग। तो एल्बम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी 2019 में ही। हाँ जी। फ्रॉम 2019 मार्च वी वर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स। तो उस टाइम 4 गाने ही रिकॉर्ड हो पाए थे। उन 4 गानों में बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गई थी। उसके बाद पेंडेमिक हो गया, फिर आफ्टर दैट इधर उधर से पैसे लेके स्टूडियो वाला बहुत अच्छा मिल गया जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मुकुल जैन फ्रॉम, ही इज फ्रॉम गुड़गांव, फेरिस व्हील स्टूडियोज। तो उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया उस टाइम। ही वाज लाइक कि जब पैसे आएंगे तब दे देना, दैट्स हाउ इट वर्क। फिर वीडियोस करी, एनिमेटेड वीडियो थी, जाकिर का वीडियो था। सो वो 10 से वो 11-12 लाख रुपए का खर्चा हो गया था फिर पूरा एल्बम का। अरे बाप फिर रे। उसके बाद लकीली उसके बाद मैंने सेकंड ईपी करी राउंड अबाउट, जिसमें नुसरत गाना था। उसके लिए उस टाइम देन आई वाज डूइंग इंडिया टूर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। तो वो पूरा निपटाया। फिर लकीली गॉड की ब्लेसिंग की एकदम ऊपर आई, आई साइंड यूनिवर्सल, देन आई एम डूइंग माय थर्ड एल्बम सेक्सी भाई जी। सो नाउ लाइक आई एम सो हैप्पी कि हाँ, जो मेहनत करी है उस टाइम में, इट्स गिविंग ऑल द फ्रूट। Get as that popular song goes, no, जब देने वाले देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ये एग्जैक्टली जा रहा है।
To conclude our interview, Sahil, I believe even as Sexy Bhaiji is up for release in March, your work has already commenced upon another album, which you spoke about to me during Hindi Gaane. So do you want to quickly Yeah, tell right. us about that album? The fourth album after Sexy Bhaiji. So the album name is called Past and Pasta. So this album is already like Past and Pasta, yeah. So like I had a very bad past and all. So whenever I like think about my past and all, now I laugh and I eat like मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ जब मैं हंसता हूँ ये वो तो ये एल्बम ऑलरेडी जो इसमें गाने हैं कुछ 5 से 6 गाने हैं वो इस एल्बम में आई गेस 15 सॉन्ग्स होंगे जितना मुझे सुनने में आया कि 15 सॉन्ग्स मुझे करने हैं इस एल्बम के लिए सो 5 से 6 गाने ऑलरेडी आई रोट इन 2018 एंड 19 सो आई एम डन विद द वर्क जब रिलीज स्टार्ट होगा मेरे पास 3-4 महीने का काम ऑलरेडी है रिलीज का सो आई हैव नो वरीज अबाउट दैट सो मेरा एक मैसेज भी है हर एक आर्टिस्ट के लिए बिकॉज मैंने एक चीज देखी है आर्टिस्ट से मिलता हूं उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं दे लाइक कि भैया हमारा गाना सुनेंगे क्यों अभी रिलीज हुआ मैंने बोला तुम सुनाओगे ही नहीं जब तुम वेट करोगे रिलीज होगा अगर वो फेमस हो गया फिर तुम स्टेज पे गाओगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे Correct. सो या So, in short, just do what you do best, trust the process, and everything will fall in place. एग्जैक्टली अगर विजन है सब कुछ हो जाएगा और लोगों की बातें नहीं सुननी है काम करना है What did you say again? Past se pasta. पास्ट एंड पास्ता Past and pasta. Okay. या So past and pasta, hasta la vista on that amazing, hopeful note. Sahil, thank you so much for giving me your थैंक यू time. सो मच फॉर हैविंग मी आई हैड अ ग्रेट टाइम या विल सी सून आई विल कम मुंबई फॉर अ शो इन फेब देन डेफिनेटली विल कैच अप टेक केयर